हो चुका है। Our brotherly country Turkey will also perform aerobatics, which is acclaimed to be one of the best solo aerobatics teams in the world. The harmony amongst the brotherly countries will be enhanced by the jubilant participation of Saudi Hawks, one of the best aerobatics teams in the world from the Kingdom of Saudi Arabia. I, on behalf of the Pakistani nation and Pakistan Air Force, thank both brotherly nations and their teams for glorifying the 70th Independence Day celebrations of Pakistan with their presence and participation. Sir, in the end, let me assure you that PAF is fully trained and ready for any future challenge. Throughout history, PAF Air Warriors have lived up to the expectations of the Pakistani nation, and this glorious tradition will inshallah continue with the same zeal and devotion. Today, PAF is a professionally ready force, second to none, as envisioned by the father of the nation. I thank you all for your patient hearing. Pakistan Zindabad, Pakistan Air Force Zindabad. इस वक्त आप इस्लामाबाद के F9 पार्क के मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर आज ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एयर शो होने जा रहा है। आज़ादी का 70वां साल और पाक फ़ज़ाइया कायम करेगी नई मिसाल। आज इस्लामाबाद और कराची में भी एयर शो होगा। फ़ज़ाई मुहाफ़िज़ बड़े शो की रिहर्सल के बाद आज परफॉर्म करेंगे। को जश्न यौम आज़ादी की पुरमसरत तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का 70वां यौम आज़ादी पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ देर बाद हम आज की यौम आज़ादी फ्लाई पास्ट की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी के जहाज़ फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे, बल्कि नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सोलो टर्क और सऊदी हॉक्स भी आज की इस तकरीब का हिस्सा होंगे। आज के फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के मिराज तैयारे कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, in a few moments from now, you will witness the fly past and aerobatics display on the occasion of the 70th Independence Day celebrations of Pakistan. Today's event is of historical importance, as in the day's fly past, besides the aircraft of Pakistan Air Force and Army, international aircraft are also participating. आज का फ्लाई पास्ट इस लिहाज से तारीखी अहमियत का हामिल है कि इसमें शामिल मिराज तैयारे अपनी फ़कीदुल मिसाल खिदमात के 50 साल मुकम्मल कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, the first formation to arrive at the venue will be the Mirage aircraft of number 25 Squadron, who will present a linear bomb burst in front of you. The Mirage aircraft has the capability to fly twice at the speed of sound and can fly in all weather conditions. These aircraft have the capability to carry all types of bombs and are also configured with different air-to-air missiles, which are also an extra edge to these aircraft. In the recent past, they have also been upgraded with the latest radar systems and avionics, which has improved its strike capabilities. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब मरकूज़ रखिए कि किसी भी लम्हे पाक फ़ज़ाइया के मिराज तैयारे अपनी भरपूर घन गरज के साथ वेन्यू पर नमूदार होने वाले हैं। आज के मिराज तैयारों की फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर यासिर मिन्हास, ऑफिसर कमांडिंग नंबर 25 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। उनके दाएं जानिब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरवर, जबकि बाएं जानिब फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदनान महव परवाज होंगे। खूबिये परवाज से इनकी चमन में है नमूद, कायम इन्हीं के दम से मिल्लत का है वजूद। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपनी निगाहों को दाएं जानिब दौड़ाइए कि वेन्यू के सामने पाक फ़ज़ाइया के मिराज तैयारे। Ladies and gentlemen, the bombers. और ख़वातीन व हज़रात, ये मिराज तैयारों का एक दिलकश अंदाज, एक मखसूस अंदाज में ये पैगाम देते हुए कि पाकिस्तान के दिफा के लिए इसके शाहीन हम वक्त तैयार हैं। ख़वातीन व हज़रात,
पाक फ़ज़ाइया लड़ाका तैयारों के साथ साथ जदीद एयरबॉर्न सर्वेलेंस सिस्टम से भी लैस है। अब जो तैयारा आपके सामने अगला फ्लाई पास्ट पेश करने जा रहा है, ये पाक फ़ज़ाइया का SAB 2000 तैयारा है, जिसका ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया के नंबर 3 स्क्वाड से है और इनका नारा है फ़िज़ाए बद्र पैदा कर। Ladies and gentlemen, now approaching towards the venue is the SAB aircraft of number 3 Squadron, and it is being piloted by Group Captain Islamabad Hussain, and the crew includes Wing Commander Khayyam Abbas, Squadron Leader Usman Khalid, Wing Commander Saeed, Squadron Leader Babar Nas. और ख़वातीनो हज़रात, वेन्यू के बिल्कुल सामने आता हुआ पाक फ़ज़ाइया का SAB 2000 एक दिलकश अंदाज में फ्लाई पास का मुजाहिरा पेश कर रहा है। और ये देखिए ख़वातीनो हज़रात, अपने ही जुदागाना अंदाज में सदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को सलामी पेश करता पाक फ़ज़ाइया का SAB 2000। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, SAB 2000 के बाद आज़ादी की इस तकरीब को 4 चांद लगाने और बरादर मुस्लिम ममालिक के बाहमी इत्तेहाद को परवान चढ़ाने के लिए अब से कुछ ही देर में आप एक ऐसा शानदार मुजाहिरा देखेंगे जो आप पर सहर तारी कर देगा। Whenever we think of a combination of danger, dare and ultimate skills, only one name hits our minds, the solo Turk. Now I hand over the mic to the voice behind this mesmerizing fleet, and Captain Emrah would be doing the commentary now. First Lieutenant Emrah Bayre, solo Turk PR officer and commentator. Hushamdit, Havatino Hazrat. May Absabko, Turki ki taraf. Her maktem keitehun. Jahado barayazam. Europe or Asia. Kamilab hota hai. As being the gift of Turkish Air Force for the 100th anniversary of it, today's Solo Turk will simulate how Turkish pilots have battles in the sky. The maneuvers you will see here in this afternoon are coordinated, tactical and techniques bring by the Turkish Air Force, the peacetime training and actual combat since 1911. The glorious story of Turkish hero is just starting right now. Power of Turkish nation is extending to infinity on behalf of aviation. You will witness very special moment that is the dance of a powerful metal. Havatino Hazrat, this is the perfect moment that power of your dreams will be a reality. This is the enthusiasm of your heart. This is the boundless courage of Turkish Air Force. Meet Turkey or Pakistani Percham, Kai Shandar, Hilal or Stare, Pure Ezas Kesat, Pesh Kertahun. Veseto Pakistan or Turkey, Domulken Magrinka, Parchameke. अब के सामने आ रहा है हमारे अजीम रहनुमा मुस्तफा केमाल अतातुर्क का पेरूकार जिसने कहा था मुस्तकबिल आसमानों में है. Ladies and gentlemen, please be ready for the signature maneuver. Solo Turk is going to come straight ahead of you to perform pitchback sliceback maneuver combined by rolls. So far so good. Months of preparation, thousands of trainings, skill, speed, and perfect talent are condensed in this maneuver. The legendary show is just starting right now. For once more, I present with honor 2017 Solo Turk first demo pilot, Captain Erhan Günar. Solo Turk is going to come to perform slow motion turn, which requires a great flight control ability of aircraft. And during it will circle around itself by having a continuous command in all three axes. Solo Turk will simulate it.
The slowest roll of a military jet aircraft with precise control inputs. Havatino Hazrat, iş şose, ap ye can sekengeyi ke, ek mukammel or behtrin, muzahira kisler hahuna caye. Snake pass is one of the hardest maneuver for F-16. The thrust, which keep our plane in the sky, is at the minimum level during this pass. As the joy of flying collects the rope by rope in your heart, it feels as if Solo Turk takes you by the hand through the clouds. Pakistan, Muhammad Ali Jinnah ka mulk hai. Pakistan, Turki ka behtarin fatih hai. Pakistan, dosti aur bhaichare ki behtarin aur ala misal hai. Is coming from your left side. Ladies and gentlemen, this is Solo Turk. And now, pointer sprint down forward with sharp turn, which means positive 9 jitter. He will be exposed to 9 times bigger gravity than normal. If we have a camera looking to his face inside the cockpit, you will realize what he looks like 40 years later. He will have dramatic changes in blood pressure, heart rate, and condition of organs inside the body. To challenge all these obstacles, he has to react for spectacular way. Barayi meherbani, ab Solo Turk, hesabır das muzahire, salute on those horn. Solo Turk, Abcheson Notski, Pays Raftar, or Sovki, Blondisye, Abke Samne se Guzrenge, Joke Awaski, Raftar ke Bohot, Karib hai. Solo Turk will now pass in front of you, 100 feet at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of the sound. And calling out the spotters, catch me if you can. Astonishing, you will watch material. The metal that's sharpened with the passion of power. And what shall I say more? After demonstrating high speed, you will see Solo Turk fly at the minimum speed possible for an F-16 aircraft. For ambitious photographers, it's time for you to get your camera ready. Now the pilot extends the air brake. If you look carefully enough during this pass, you may see the pilot waving at you. And after this pass, proceeding a powerful climb, it's nose to 90 degrees up, and he will still accelerating. For once again, I present with honor 2017 Solo Turk. First demo pilot, Captain Erhan Günar. Pakistan, Türkiye. Abki Perfur, Paliyo me Solo Turk. Aerobatics is exciting adventure that involves
extraordinary movement. In fact, it is inexpressible, but you can just experience it with solo Turk today. Proceeding a powerful climb, it's close to 90 degrees up and still accelerating. For the next maneuver, I claim that you can only see this roll by solo Turk. Still, I couldn't understand how he can do this solo Turk roll. Please focus on this maneuver and the perfection of the acrobatics. Please hang on tight. Please be ready in closest pass of our pilot. During that pass, you will see all details inside the cockpit, as if you are skimming the solo Turk cockpit. Ladies and gentlemen, please pay attention. Unprecedented design of solo Turk. He is coming for 8-point roll. In every roll, you can see our unique design. Golden Eagle is taken by Turkish Air Force streamer and refers to Turkish people's freedom. The star, which is next to Golden Eagle, solo Turk, Turkey and Pakistan, will the star of the 21st century. And at the bottom, crescent and star symbolize our national flags, Turkey and Pakistani flags. Please be ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the last page. Solo Turk will start the next maneuver in the upside down position at a very low altitude, which causes the blood in the body to run through the head. Then it will circle around itself while it's in front of you. At the inverted flight, F-16 can fly just 30 seconds. Because of the fuel tanks do not feed in the engine during this pass, so it is really critical. Yes, आपको बहुत जल्दी, तेज और महारत के साथ किया जाएगा. तैयार हो जाइए ये देखें. And yes! आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए सोलो तुर्क जहाज को खास अंदाज में लाकर सलामी पेश करेगा. To thank all of you, Solo Turk will salute you by the nose of the plane. Each country has its own story, a kind of existential identity and language and spirit. Pakistan is the more the loving embrace of a mother, which is perhaps why it harbors such a diversity. Solo Turk is flying for the 7th independence anniversary of Pakistan. Finalize the show with high-level concentration, we will have vertical climb maneuver, which is combined by rolls. We'll maximize on your memories. Inspiring locations, mind-broadening experiences, and lots of reasons to travel Turkey await you. By this show, we invite all of you as a guest. Turkey is the right destination for those who want to enjoy the smell of Asian flowers and the beautiful blue seas. He is ahead of you right now. Absappi, Hat Hilakar, Türk pilot, Sedostikari Isarkari.
Pakistan. Solo Turk displayed for 7th independence anniversary of Pakistan. And thank you very much for all spectators. Thank you very much for your enthusiastic applauses. And as the last message, Jive Jive Pakistan, Jive Jive Turkey. जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे तुर्की, जीवे जीवे पाक तुर्क दोस्ती। ख़वातीनो हज़रात, ये शहर है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। सोलो टर्क की शानदार परफॉर्मेंस का खुमार अभी छटा नहीं कि अब आपके सामने दुनिया की चंद बेहतरीन एरोबैटिक्स टीम्स में से एक पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवा चुकी और आज हमारे दरमियान मुस्लिम बरादरी की बाहमी यगानगत को मद्देनजर रखते हुए इस आज़ादी की तकरीब का हिस्सा सऊदी अरब की एरोबैटिक्स टीम सऊदी हॉक्स अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ आने वाले हैं। Ladies and gentlemen, despite their hectic and busy schedule all around the globe, Saudi Hawks wanted to come to Pakistan just for the Independence Day celebrations. And now I will shift the controls to squadron leader Simon Ray, who is going to describe the aerobatics profile for the audience. Mr. President, Your Excellencies, Chief of the Air Staff, VIP guests, ladies and gentlemen, boys and girls, Salam Alaikum. Thank you very much for that kind introduction. And on behalf of the Royal Saudi Air Force display team, the Saudi Hawks, I would like to welcome you to this afternoon's display. We're very honoured to be here as part of today's celebrations for Pakistan's 70th Independence Day. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अपने दिल थामे रखिए कि किसी भी लम्हे सऊदी हॉक्स अपनी पूरी आबोताब के साथ वेन्यू पर नमूदार होने वाले हैं। So ladies and gentlemen, it's my job this afternoon to guide you through the display. Make sure you're looking in the right direction to capture all the action and also give you some information about the team, its pilots and the aircraft we fly. So currently the team are positioned behind you, the large hill you can see behind you. The team are back there at the moment, and I'll let you know when they're about to fly over your head and start the show. The display today though consists of two very distinct halves. During the first half you'll see the team perform as one unit, changing formation shapes, looping and rolling. During the second half, the formation splits into two sections, allowing the team to carry out high-energy manoeuvres and dynamic crosses. So, ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to the Royal Saudi Air Force National Display Team, the Saudi Hawks. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आपके सामने अमूदी सिम्त में परवाज़ करते हुए सऊदी हॉक्स। The team have arrived in a formation we call Battle, which, as you would have seen, looks like a very large V. As the aircraft climb, the bosses called them into shield formation. ख़वातीनो हज़रात, सऊदी हॉक्स अपनी तमाम तर मसरूफियात तज कर पाकिस्तान का जश्न यौम आज़ादी मनाने आए हैं और ये देखिए एक खूबसूरत अंदाज में फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए सऊदी हॉक्स। The Saudi Hawks are the public face of the Royal Saudi Air Force. The team was formed in 1998 at Dhahran Air Base. They were formed to display 100-year anniversary celebrations of the forming of the modern Kingdom of Saudi Arabia. Since the team's creation, the Saudi Hawks have displayed at many official and public ceremonies inside and outside the kingdom, representing the professionalism, excellence and dedication of the Saudi Armed Forces and its personnel. So to your right, the boss has now changed the team into diamond formation for the diamond roll. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दाएं जानिब रखिए सऊदी हॉक्स इंतहाई नीची परवाज़ करते हुए और इंतहाई करीबी फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए अमूदी सिम्त में परवाज़ कर रहे हैं।
F-65 aircraft. This aircraft has a Rolls-Royce Adore engine, produces 5,700 pounds of thrust. This makes the aircraft very manoeuvrable, allowing it to pull up to 8G. Today's show, or most of it, is flown at around 360 knots or 650 kilometers an hour, which is right in the middle of the aeroplane's speed envelope. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हॉक तैयारों से निकलता ये हरा और सफ़ेद धुआं इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आज जश्न आज़ादी में सऊदी अरब भी हमारे साथ है. So if you cast your eyes to the left-hand side now, the boss has called the team into helix formation. For a manoeuvre down the line, we call the helix. I'll let you listen to the team. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, निगाहें बाएं जानिब मरकूज़ रखिए. सऊदी हॉक्स अपने अगले मनूवर की जानिब बढ़ रहे हैं. और ये देखिए एक इंतहाई दिलचस्प नजारा जो आज तक आपने सिर्फ अपने टीवी की स्क्रीन पर देखा, आज यहां आपके सामने इस्लामाबाद की फिजा में. So 6 and 7, which were rolling behind the other aircraft, will catch the formation up now. And the boss, as he comes left, will move the formation into a shape we call tiger. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, सऊदी हॉक्स दाएं जानिब से अपने अगले मनूवर की तरफ बढ़ते हुए. So from the right-hand side, the team approach for the tiger bend. और ये देखिए आपके दाएं जानिब से सऊदी हॉक्स सफेद धुआं छोड़ते हुए अपने अगले मनूवर की जानिब बढ़ रहे हैं. और एक शानदार अंदाज में इंतहाई नजदीकी फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए आपके सामने एक कोऑर्डिनेटेड टर्न का मुजाहरा पेश करते हुए सऊदी अरब की एरोबैटिक्स टीम सऊदी हॉक्स. So as the team continue the bend in front of you, the boss will shortly call them into Phoenix formation. You'll see Saudi 6 and 7 move to the outside of the formation. Although this looks like a pretty easy formation to fly, this is the most difficult position that we fly, as all the pilots flying on the boss's wing are looking over their shoulders to fly formation. वेन्यू के एंड सामने अपना टर्न मुकम्मल करते हुए सऊदी हॉक्स एक इंतहाई खूबसूरत फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए. As the team rolls out, you'll see Saudi 6 and 7 turn their smoke off and they move in behind the boss. I'm sure you've already worked it out, but the boss leads the team from the front and uses radio commands to maneuver the formation around and change formation shapes safely. ख़वातीनो हज़रात, आपको बताता चलूं कि किसी भी फॉर्मेशन की कामयाबी उसका पूरा इन्हिसार उसकी लीडर की कमांड पर है. उस लीडर के विंगमैन जब बेखौफ व खतर होकर अपने लीडर की बात मानते हैं और उसके इशारे पर अपनी फॉर्मेशन तब्दील करते हैं तो वो एक खूबसूरत मिसाल बन जाती है. So approaching from the left-hand side, the team are just about to fly a Typhoon into spare loop. They've started this loop at 650 kilometers an hour. As they reach the top at 1 mile in the air, or 6,000 feet, the aircraft will slow down to 200 knots, almost no G-force on the top of the loop. Then as they accelerate down the backside, the G-force comes back on
and the speed increases again. और ख़वातीनो हज़रात, आपके सामने इस पाक फिजा में सऊदी हॉक एक ग्रुप का मुज़ाहिरा पेश करते हुए वेन्यू के दाएं जाने अब जा रहे हैं। All of the pilots in the team come from a fast jet background and have all flown on operational frontline squadron. The team support staff are drawn from a wide variety of engineering, logistics and administrative backgrounds and play a crucial role in keeping the team safe while in the air and on the ground. मेरी तमाम F9 पाक के हाज़रीन से गुजारिश है कि जहाज़ों के इस डिस्प्ले के दौरान बराए मेहरबानी गुब्बारे फिजा में मत छोड़ें, वो जहाज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। So this is the last maneuver of the first half and it's called the tent break. ख़वातीनो हज़रात, अपने पहले मुज़ाहिरे के आखिरी मनूवर की जानिब बढ़ते हुए सऊदी हॉक आपके सामने एक खूबसूरत बॉम्बर्स का मुज़ाहिरा पेश करेंगे। और ये खूबसूरत बॉम्बर्स का मुज़ाहिरा आपके सामने इस्लामाबाद की इस फिजा में सऊदी हॉक मुख्तलिफ सिमतों में परवाज कर गए। जरा ठहरिए ख़वातीनो हज़रात, ये तो अभी पहला हिस्सा था। सऊदी हॉक्स अपने प्रोफाइल के दूसरे हिस्से की जानिब अब बढ़ने लगे हैं। दिल थाम लीजिए कि ये वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से ज्यादा खतरनाक और दुश्वार है। So ladies and gentlemen, that's now the end of the first half and the boss is repositioning the formation crowd front. The next shape you're about to see is called the Saudi logo. This is a symbol of Saudi Arabia and is a palm tree with crossed swords. The palm tree represents the wealth of the people, while the swords signify the strength and justice of the kingdom. मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के एंड सामने रखिए। सऊदी हॉक्स अब आपके सामने एक ऐसा मुज़ाहिरा पेश करने वाले हैं कि आपके दिल धक से रह जाएंगे। In February 2012, the team entered the Guinness Book of World Records for this maneuver by creating the largest sky drawing by a formation jet aerobatic team. The logo was measured at a total area of over 53 million square meters. So get your cameras ready, look directly in front of you for the Saudi Hawks logo. और ख़वातीनो हज़रात, वेन्यू के एंड सामने से अमूदी सिमत परवाज़ और ये दो जहाज़ों ने क्रिस क्रॉस हरे रंग के साथ और सफेद रंग सऊदी अरब का लोगो बनाते हुए सऊदी हॉक्स। Now, as I mentioned earlier, the formation splits into two different elements during the second half. The two aircraft now descending to your left and your right are members of the synchro pair. To the right, Saudi 6 Major Sulami, and to the left is Major Mohsen. The synchro pair are responsible for all the high G maneuvers and have a very tough job of making sure they cross exactly in front of you each time. और ख़वातीनो हज़रात, आपके सामने क्रिस क्रॉस का एक खतरनाक मुज़ाहिरा। और ये देखिए किस खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान के सदर को सलामी पेश करते हुए सऊदी हॉक्स ने एक इंतहाई खतरनाक और दुश्वार मुज़ाहिरा पेश किया। So with only 100-foot separation after each cross, this is the synchro carousel. मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अपनी निगाह इस तैयारे पर रखिए कि ये दोबारा से उसी खतरनाक मुज़ाहिरे की जानिब बढ़ रहा है। As synchro logo to the left and right now, if you cast your eyes directly out in front of you again, you'll see the boss approaching with a 5 ship. The aircraft at the back of the formation is Saudi 5, Captain Fala. Shortly you'll see Fala roll his aircraft around the other 4 to make an infinity symbol, or figure of 8, as you can see now.
Once again, get your cameras ready as the aircraft approach for the infinity break. और ख़वातीन और हज़रात निगाहों को वेन्यू के सामने रखिए अपने अगले मनूवर की जानिब ये सऊदी हॉक्स का इन्फिनिटी ब्रेक। Once again, ladies and gentlemen, if you look left and right, you'll see Synchro joining from behind the crowd. The next maneuver is called the opposition wave into Dragon. और ख़वातीन और हज़रात वेन्यू के दाएं और बाएं जानिब से बढ़ते हुए एक दूसरे की तरफ Now, if you look to your left in the distance, you'll see a large skyscraper. It's Saudi 6 coming back towards you for the Dragon. Where he's coming from, once this maneuver is finished, if you look where the green smoke is, you'll be able to see the boss coming from that direction as well. और ख़वातीन और हज़रात दाएं और बाएं जानिब से एक दूसरे की जानिब फिर से बढ़ते हुए एक मुज़ाहिरा। इतनी बारीकी से ये मनूवर सरअंजाम देना इन हवाबाजों की कमाल महारत का मुंह बोलता सबूत है। So keeping your eyes on where the green smoke was turned off, you'll shortly see the boss approaching with Saudis 2 and 3, with number 4 positioned behind him. He'll call the smoke on, and then command number 4 to roll around. This maneuver looks great, it's really fun to fly, and we call it the flag roll. और ख़वातीन और हज़रात इस्लामाबाद की फिजा में मुख्तलिफ रंग बिखेरते इतनी खूबसूरत फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए सऊदी हॉक्स का ये नज़ारा आपकी निगाहों के ऐन सामने। Smoke will shortly go off from the flag roll. Again, cast your eyes out to the front of your seats and you'll shortly see 2 aeroplanes pull up in front of you. मौजूद ख़वातीन और हज़रात अपनी निगाहों को वेन्यू के बिल्कुल सामने रखिए कि किसी भी लम्हे सऊदी हॉक अपने अगले मुज़ाहिरे की तरफ बढ़ रहे हैं। This synchro maneuver needs no explanation and is certainly the most romantic part of our show. This is the synchro heart and speed. और ख़वातीन और हज़रात क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या शक्ल फिजा में बना रहे हैं? जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक दिल की शक्ल इस पाक वतन के इंडिपेंडेंस डे की खुशी में बना रहे हैं। और देखिए किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये अपनी फॉर्मेशन मुकम्मल की। और वो देखिए एक सऊदी हॉक उसी दिल के अंदर से एक तीर के अंदाज में अपनी अगली शक्ल बनाता हुआ। So I hope you'll manage to get a good picture of the heart there. Now again, keep your eyes on the 2 aeroplanes left and right of you. Synchro positioning again down the line for the avalanche and slingshot maneuver. मौजूद ख़वातीन और हज़रात अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं और उसके बाद बाएं जानिब रखिए। 2 सऊदी हॉक एक दूसरे की तरफ इंतहाई नीची परवाज करते हुए बढ़ रहे और एक खूबसूरत अंदाज में ये आपकी निगाहों के सामने एक क्रिस क्रॉस मनूवर का खतरनाक मुज़ाहिरा एक बार फिर सऊदी हॉक्स की तरफ से। Synchro vacating crowd front. Now their smoke will go off. If you look to your right hand side now, you'll see the boss arriving with 5 aircraft to fly down the line for a maneuver we call the rollbacks. The aircraft as pairs pull up and out of the formation and roll around the aircraft outside them. As this is happening, the aircraft on the outside fill the hole that the aircraft on the inside has just left. This is a very difficult maneuver to fly, requires the pilots not only to be accurate inside their aircraft, but also talk on the radio while flying upside down. सऊदी हॉक्स की
जानिब से एक जबरदस्त मनूवर आपके सामने पेश किया गया। हरे और सफेद रंग का धुआं छोड़ते ये सऊदी हॉक आज इस जश्न आज़ादी के फंक्शन में पाकिस्तान का साथ देते हुए इस्लामाबाद की फिजाओं में और F9 पार्क में हाजरीन की कसीर तादाद जिसमें शामिल नौजवान, बच्चे, खवातीन और मोहम्मद अफराद इस एयर शो से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। Once again, if you look out in front of you now, you see synchro positioning for the vortex and cyclone. और खवातीन और हजरात वेन्यू के एंड सामने एक खूबसूरत अंदाज में ये क्रिस क्रॉस का एक खूबसूरत मुजाहरा सऊदी हॉक्स की जानिब से। आपकी निगाहों के एंड सामने दोबारा से खतरनाक इतने करीब से गुजरते हुए ये सऊदी हॉक अपनी महारत का सबूत दे रहे हैं। So on your right hand side, number 6 has just turned his smoke from red to white. This is pretty simple for the next maneuver to be able to find the formation. There's number 6 who's turning towards us. If you follow his aircraft, he will lead you directly towards the boss. We've called this next maneuver the goose. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाह इस अकेले तैयारी की तरफ रखिए और उसके बाद बाएं जानिब से बढ़ती फॉर्मेशन की तरफ रखिए। एक खतरनाक मुजाहरे के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर से अमूदी सिंध में परवाज करता ये सऊदी हॉक का एक खूबसूरत मुजाहरा। इस्लामाबाद की फिजा में ये खूबसूरत धुएं से लकीरें बनाते सऊदी हॉक्स पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती का इजहार करते हुए। So the air brakes have come in now and the boss is pulling up for the formation into a steep climb for number 6 and 7 to then join for the final maneuver of our show. Like Joe. Salient. Solid copy. Amazing. और ख़वातीन और हज़रात सऊदी हॉक्स को अपनी निगाहों से ओझल मत होने दीजिएगा, ये अपने अगले मुजाहिरे की तरफ बढ़ रहे हैं। So the final maneuver of our show is called the bomb burst and is your last opportunity to take a photo of the team. Ladies and gentlemen, from the boss and the rest of the team, it only leaves me to say thank you for having us here in Islamabad this afternoon. We have thoroughly enjoyed displaying for you and we hope you've enjoyed watching our show. I also hope you enjoy the rest of today's celebrations. So finally, in front of you as the smoke comes on in the distance, representing the Kingdom of Saudi Arabia and the Royal Air Force, the Saudi Hawks. और ख़वातीन और हज़रात, वेन्यू के एंड सामने से बढ़ते हुए अपने आखिरी मनूवर की जानिब सऊदी हॉक्स इस वक्त आपके सामने एक बॉम्ब बस्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे। और ख़वातीन और हज़रात वेन्यू के एंड सामने से सऊदी हॉक्स और ये एक खूबसूरत बॉम्बर्स का मुजाहिरा आपकी निगाहों के सामने। ख़वातीन और हज़रात, इस तमाम मुजाहिरे के बाद सऊदी हॉक अब वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं
सदर पाकिस्तान को सलामी पेश करने के लिए। वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। ख़वातीनो हज़रात, अब से कुछ ही देर में एक खूबसूरत सलामी का मुजाहिरा सऊदी हॉक आपके सामने पेश करने वाले हैं। और ख़वातीनो हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब रखिए। सऊदी हॉक इंतहाई नीची परवाज़ करते सलामी देने के लिए वेन्यू पर आ रहे हैं। इस पर जंग के साए तले हम एक है, हम और ये सदर पाकिस्तान को सलामी पेश करते हुए सऊदी हॉक फिजा में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम के रंग लेके एक खूबसूरत मुजाहिरे के लिए एक जुदागाना अंदाज सऊदी हॉक्स का, सलामी का एक खूबसूरत अंदाज सऊदी हॉक्स। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आज़माता है। जवानों की ज़ुबान पे नाराए तकबीर आता है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं। मैं हुस्ने इंतखाब हूँ, शाही हूँ, उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ। सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। Ladies and gentlemen, today we must bow in gratitude to Almighty because it was the day when we were blessed with the greatest gift of independence. And we must cherish in jubilation for the treasure of freedom. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, you will witness the flypast led by Augusta 131, 139, led by Pakistani pilots. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अब से कुछ देर में आप मुलाहिज़ा करेंगे हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट। कुछ ही देर में वेन्यू के दाएं जानिब से उफक पर हेलीकॉप्टर्स की एक फॉर्मेशन नजर आएगी। पाक फजाओं का फख्र ऑगस्टा वेस्टलैंड 139, जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जदीद एवियोनिक्स से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स की शान ऑगस्टा 139। Ladies and gentlemen, shortly approaching from the right would be the formation of two Augusta Westland 139 helicopters. These helicopters belong to the number 88 Search and Rescue Squadron of Pakistan Air Force. और ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब देखिए। ऑगस्टा 139 फॉर्मेशन वेन्यू की तरफ बढ़ रही है। Today this formation is being led by Wing Commander Irfan Zaid, Officer Commanding number 88 Squadron, and with him co-pilot is Squadron Leader Nasir,
whereas the second helicopter is being piloted by Wing Commander Awais Amjad, Flight Commander Operations number 88 Squadron, and with him co-pilot is Squadron Leader Hammad. और ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब रखिए। ऑगस्टा फॉर्मेशन इंतहाई खूबसूरत फ्लाई पास्ट का मुजाहरा आपके सामने पेश करते हुए। It is pertinent to mention here that the Augusta helicopters have been recently inducted in Pakistan Air Force, and in a record time of 2 months, the helicopter was not only assembled but has also attained operational status as combat search and rescue helicopter. This remarkable achievement was only possible with the exceptional professionalism and dedication of Pakistan Air Force. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, 2 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान लाकर असेंबल किया जाने वाला और उसी अरसे में ऑपरेशनल स्टेटस हासिल करने वाला ये हेलीकॉप्टर पाक फिजाइया की शान ऑगस्टा 139 इस वक्त वेन्यू के सामने से फ्लाई पास्ट का मुजाहरा पेश कर रहा है। शाही तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू बाजुए पर से इसे और हवा दे। Ladies and gentlemen, now you will be witnessing the workhorse of Pakistan Army Aviation, the Mi-17 helicopter, which will demonstrate quick insertion of special forces troops in target area. और ये वेन्यू के एंड सामने पाकिस्तान आर्मी एविएशन का Mi-17 हेलीकॉप्टर, जो दुश्मन के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज को तेजी के साथ दाखिल कराने के लिए इस्तेमाल होता है। Ladies and gentlemen, this helicopter belongs to the legendary 27 Army Aviation Cargo Squadron, also known as the Kingbirds, and is piloted by Lieutenant Colonel Muhammad Ashfaq as the pilot in command and Major Zulfikar as co-pilot. और ख़वातीन और हज़रात, अब ये हेलीकॉप्टर आपके सामने फास्ट रोपिंग का मुजाहरा करेगा। दाएं जाने को होवर करते हुए ये हेलीकॉप्टर अब अपने दरवाजे खोलेगा और उसमें से कमांडोज को, और ये देखिए किस खूबसूरत अंदाज में रस्सियां फेंक दी गई और ये फास्ट रोपिंग का शानदार मुजाहरा आपकी निगाहों के एन सामने। और यूं पहला कमांडो जमीन पर उतरने में कामयाब, पाकिस्तान आर्मी एविएशन का Mi-17 हेलीकॉप्टर। आज के इस फास्ट रोपिंग मुजाहरा जिसकी क़यादत कैप्टन इजाज कर रहे हैं, अपनी टीम के हमरा जमीन पर उतर रहे हैं। Ladies and gentlemen, you can see the commandos coming out with the help of this rope. The Kingbirds have the unique honor of actively participating at the forefront in Operation Al-Mizan, the famous heliborne operation of Peshawar Valley, Operation Zarbeaz, Operation Radul Fasad, relief operations of 2005 earthquake and 2010 floods. Mi-17 हेलीकॉप्टर 1996 में आर्मी एविएशन में शामिल किया गया, जो कि 4000 किलोग्राम तक वजनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। Ladies and gentlemen, you can see the brave soldiers are moving out of the helicopters from both the sides. और ख़वातीन और हज़रात, ये देखिए एक और बहादुर सिपाही किस खूबसूरत अंदाज में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और यहाँ पर हेलीकॉप्टर को होवर करवाना, एक जगह पर हवा में मुअल्लक रखना, ये हेलीकॉप्टर पायलट की तकनीक और कमाल महारत का मुंह बोलता सबूत है। Ladies and gentlemen, the top has been completed and now you can see the Mi-17 is exiting out of the area. और ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब रखिए। वहां से नमूदार होता हुआ आर्मी एविएशन का प्यूमा SA-330 हेलीकॉप्टर आपके सामने स्पाई टेक्निक का मुजाहरा पेश करेगा। Ladies and gentlemen, after the Mi-17, the next helicopter approaching the venue is the Puma SA-330 helicopter of number 28 Army Aviation Squadron. The helicopter is being flown by Major Yasir Jamal and Major Babar Yunus. ख़वातीन और हज़रात, इस हेलीकॉप्टर में महवे परवाज मेजर यासिर जमाल और मेजर बाबर यूनस आपके सामने इंतहाई महारत से स्पीड टेक्निक का मुजाहरा कर रहे। स्पीड टेक्निक में SSG के कैप्टन अली अपने जवानों के साथ स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस दिलकश अंदाज में धुआं छोड़ते स्पीड टेक्निक का मुजाहरा करते ये
पाक आर्मी के कमांडोज। Ladies and gentlemen, the helicopter is displaying the speed technique with SSG commandos wearing their special gears and are hanging with the helicopter through a sling. The team is being led by SSG Commando of Pakistan Army Captain Ali. You can also see that the team is carrying the national flag. The speed technique is used to drop personnel in high altitude terrains and in water where helicopter landing is not possible. पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराते हुए ये जवान स्पीड टेक्निक का मुजाहरा ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कर सकता, और किस खूबसूरत अंदाज में स्पीड टेक्निक का मुजाहरा करते हुए हवा में यूं मुअल्लक रहना इन जवानों की महारत का सबूत है। इसमें इनको अपने होश हवास और हवा के दबाव दोनों से लड़ना पड़ता है, और सलाम है पाकिस्तान के इन कमांडोज को। और ख़वातीनो हज़रात, अब निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब रखिए कि पाक फ़ज़ाइया का ऑगस्टा 139 आपके सामने अपने एरोबैटिक्स प्रोफाइल को पेश करने के लिए आ रहा है। Ladies and gentlemen, the Augusta Westland 139 is a medium-sized twin-engine high-tech helicopter equipped with the latest avionics. Ladies and gentlemen, we present to you the Augusta 139 and the call sign being used is Wolf 1. और ये देखिए ऑगस्टा 139 आपके सामने, और एक खूबसूरत अंदाज में दाएं जानिब को घूमते हुए स्टीप टर्न का मुजाहरा पेश करते हुए वोल्फ 1। Ladies and gentlemen, Wolf 1 is now completing the 360-degree turn, and after completing the turn, it would be readjusting itself with the right wing over. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.